Good afternoon. This is November 23, paper 4 to IGCSE. Since IGCSE population is more, we just have one GC student right now. Rather two, I think, Roshin and Shima. But more are IGCSE. Duret, Reja, Rabaisha, Amir Hadan. 4 versus 2. Question 1. Yes, substance in the RBCs that combines with oxygen. Hemoglobin, Hemoglobin. Well done. Hemoglobin. And name the component of blood that promotes blood clotting. fibrogen, Oops. Anybody else? There is something that helps blood clotting. Thank you, Rubasha. Platelets. And next is calculate the percentage increase and the mean diameter of RBCs when they are put in 0.8. तो बच्चों रिजा परसेंटेज इंक्रीज कैसे फाइंड करते हैं 0.8 वाले में परसेंटेज का हमने बहुत दफा किया है ना फाइनल माइनस initial over initial into 100. या तो हाउ टू फाइंड दिस 8.2 minus 7.5 over and 200. Right? Yes. Since we have less time, someone is solving for us. तो ये 3 मार्क्स है एक इसका होगा एक स्टेप होगा इस आंसर का बच्चों को इसका भी देखना है ठीक है दिस एंड 200 दिस इज सेकंड मार्क एंड 9.2 ठीक है गुड वन ही सेज टू सिग्निफिकेंट फिगर्स ये तो 3 हो गए 9.3 यस देखो ये बोल्ड हुआ है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स थैंक यू रिजा 9.3 Well, so the next is explain results RBC when they are put in 1.8. रोशीन तारिक से पूछते हैं रोशीन बेटा 1.8 में जब हम कर रहे हैं तो you know diameter of RBC goes more or less. रोशीन. Sir, more? No, initially it was 7.5 and now it becomes 6. Oh, less. So it means water went into them or out of them. Out? Okay, can you explain now in 3 marks? Oh, because water potential inside RBCs. Amir Haider bhai किधर चले गए हैं? Sir, इधर ही हूँ. Is dashed, not good performance, is dashed then outside. Is higher than outside. Yes, is higher than outside. 3 marks. So water moved dash. Anybody? Outside the cell, red blood out. cell. Water moved out. What is it called? Dash osmosis. X osmosis. X osmosis. है ना? Thus the cells, cells dash. Cells get dash. Shrunk या flaccid? Shrunk. Wow. दुरेत बेटा flaccid plants होते हैं. Diameter decrease. समझ आ रही है आप लोगों को? Flaccid Yes, sir. plants के लिए. अच्छा रिजा से हम पूछते हैं स्टेट वाई देयर इज नो चेंज व्हेन दे आर पुट इन 0.9 देखो 0.9 में जब रखा 7.5 7.5 देयर में वेट Because the concentration. रिजा just no change in diameter yeah पूरा explain करना because water potential no man inside RBC is same है ना that is what 0.9 so did water go in did water go out No, sir. It neither went in. yes, it went in it went out but no net movement occurred no net movement पानी तो अंदर भी जा रहा बाहर भी but net movement नहीं हम एमसीक्यू भी करते थे
बच्चों ऑस्मोसिस में ये होता है ना, देखें फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू सेल्स, one is 1% NaCl, the other is 1% NaCl. So water will go from left to right and right to left, but osmosis won't take place. Yeah. तो आपने कहा ना नो नेट मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क इसी बात का है समझने में. स्टेट व्हाई RBCs burst when they are put in pure water. Because the pure water has lesser water potential. Oh, zalim. Oh, more water potential, so Water has the water went inside. dash water potential. Higher. Higher. प्योर वाटर से ज्यादा किसी चीज का वाटर पोटेंशियल नहीं होता. Yes, हायर sir. वाटर पोटेंशियल, जिसको जीरो भी कहते हैं. So water moved Into the cell. फिर हम वही कर गए osmosis कहना चाहिए. चलो into the cell. और बेटा y का आंसर क्या होगा? No cell wall. Yes. So cells burst. Uses of water. ईमान भी आ चुकी है. ईमान बेटा uses of state 2 uses of water. And plants. Sir, transportation of minerals. And transpiration. Transport of minerals, yes. It works as a solvent, है ना? Acts Yeah. as a solvent. And number 2, it helps in loss of. Water through transpiration. Adar bhai क्या हो गया बेटा? Are you okay? Loss of heat, है ना? Yeah. As transpiration. You didn't go through this paper, I think. No, sir. I had told you in person as well. Adaptive feature क्या होता है बच्चों? What is adaptive feature? फिर इसको सुने बेटा, समझें फिर. अगर आप ये आजकल आप लोगों ने काम नहीं करते, कब करेंगे मुझे बताएं. पेपर्स में 2 वीक रह गए, ये मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ बार बार. IGCSE वाले एटलीस्ट दे शुड गो थ्रू देयर पेपर्स. आप लोगों ने नहीं किया वो ये पेपर, कब करेंगे? कौन सा किया है? आपने रजा रोशीन कितने पेपर कर लिए, कितने साल के? हारिस भाई, ईमान कितने साल के पेपर्स हो गए? ईमान चलेगी. मुझे बताओ एडेप्टिव फीचर्स क्या होते हैं? इनहेरिटेड फीचर. बच्चों टाइम कुछ भी नहीं बचा प्लीज, खुदा के लिए. 6 साल के पेपर्स हो तो एक ग्रेड नहीं आता. इनहेरिटेड फीचर. दूसरा फीचर, दूसरी बात क्या होती है? विच इंक्रीजेस The survival chance. या विच इंक्रीजेस द फिटनेस कह दो, या विच इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल. Yeah. अब टाइगर का अडेप्टिव फीचर क्या होगा? Sir, it's speed, claws, teeth. Speed, claws, have you that? Yeah. और ये प्लांट कौन सा होगा? हाइड्रोफाइट या जीरोफाइट? ईमान बच्चों हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट्स the ones which Sir, are adapted to live in Water. water. तो इनके 3 फीचर्स तो हमने पढ़े थे. एक तो स्टोमेटा ऑन द अपर साइड, यस और नो? Yes. yes, Have large surface area क्यों to होते हैं absorb बेटा? more water. एक सेकंड है. Sunlight. स्टोमेटा ऑन द अपर साइड to absorb dash from air. oxygen from air. Carbon dioxide. Oh yes, sir, CO2. And also they have air spaces. Why? Which help them float. On top of the water. Yeah. Yeah. वो जो नहीं होती जैसे लाइफ जैकेट, Yeah. और ये वाइड होते हैं to have more surface area thingy. Anyway, so what is A, B and C? Yes, Buret bhai? No one? A, पहली साइड मेसोफिल. B, Spongy mesophil. yes, Spongy mesophil. and C, And C is air spaces. air spaces. Very good. How C is adapted? Iman, 3 marks. C holds the air
And make Sir, which helps the hydrophytes to float on the water surface. float on the water, yeah, prevents them from going down. और तीसरा मार्क कहाँ से बनेगा? सर इनका वो भी बताना है, डिफाइन है। एक सेकंड, एयर स्पेस है बच्चों, reduces density of leaf, allowing float, accessible to light. Yeah, it is an approach to light. अभी आप welcome. आज पॉपुलेशन आईजीसीएसई थी, हमने आपको पता है हमने जीसी आईजीसीएसई का पेपर अपलोड कर दिया, देखे ना? तो बेटा ये जो है ना, टोमेटो एंड वाटर लिली, आप लोग मुझे बताएंगे, हम कंपेयर एंड एक्सप्लेन द डिफरेंसेस. कैन यू कंपेयर दीस डिफरेंसेस? एनीबॉडी? तो जूम इन करो जी. Yes, sir. टोमेटो में ना आप देखो, टोमेटो में अपर साइड पे एंड अपर एपिडेमिस देयर आर 10 टोमेटा, और वाटर लिली में 475. लोअर में Yes. आप कह लो, आप कहोगे अपर साइड पे टोमेटो हैज लेस एंड वाटर लिली हैज मोर, बट लोअर साइड टोमेटो हैज मोर एंड वाटर लिली हैज लेस. Just you need to quote the data and explain the difference. Yes, because water lily is dashed. It's a Hydrophyte. Hydrophyte, yeah, Yes. hydrophyte, and will have to absorb dash. Sun CO2 Carbon from dioxide. air. CO2 from air, so upper side has a lot of stomatas on the upper epidermis. stomata, yeah. State the name of cell that controls the opening of stomata. Guard cell. Guard cell. Guard cell, yeah. This is synapse. So what is X? Yeah. V say. Vesicles. Vesicles, very good. And this one is gap, you know? Yeah. The synaptic cleft. synaptic cleft. Very good, very good. Synaptic cleft, the gap. Neurotransmitters are released and they bind to their receptors, and then story goes on. Yeah. Parkinson's disease. They are asking you about Parkinson's disease. It's called information handling, no? It's out of course. It's just like suggest and explain effect of Parkinson's disease on a person's movement. So ये कह रहे हैं कि use information this neuron does it. Oh, तो बच्चों ये वाला पार्किंसन डिजीज वाले बंदे का और ये नॉर्मल बंदे का. तो पार्किंसन वाला आप देखें, देयर आर मोर न्यूरोट्रांसमीटर या लेस न्यूरोट्रांसमीटर. तो लेस बाइंडिंग टू रिसेप्टर, लेस एक्टिवेशन, तो उसके मसल की मूवमेंट less vesicles. तो डिस्क्राइब टू वेज इन व्हिच कंट्रोल्स डिफर. अच्छा सॉरी, तो ये 5 मार्क्स में बताने हैं, ठीक है? क्या करेंगे? लेस vesicles fuse, है ना? Yes. You're right. So less neuro transmitters bind to post synaptic membrane. Yes, बच्चों? Less dash impulse will travel ahead to brain. Less sensory impulse will travel to the brain. Will travel. Dash muscle contraction. Stronger or weaker? Weaker. Weaker. And dash muscle coordination. Strong or weak? Weak. Weak. पता है ना, वीक कोऑर्डिनेशन मतलब वो फिर यूं जर्की सी मूवमेंट होती है, पता समझ रहे आप? अच्छा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है. नर्वस और हार्मोनल, हाउ डू दे डिफर? लेट्स सी हमारे साथ अभी ऑनलाइन में कौन कौन है. चीमा, ईमान, रशीन, हैदर, बस. यस, Their nervous system is more faster than the hormonal. nervous and hormonal. Very good. Roshin. Nervous system is through electrical current and hormonal system is through blood. Very good. Faster, electrical, and it is through dash. Neuron. Neurons. Yeah. It is specific. It's short term. याद है ना? Yes. Yes. Hormonal is what? इसका opposite ना? Slow. Chemical through dash.
थ्रू ब्लड है ना, एंड स्पेसिफिक के ऑपोजिट क्या होगा, जनरल. Sometimes like growth hormone affects on the whole body. अच्छा, how shape of protein is determined? Receptor protein, कोई भी प्रोटीन होगी ना, उसकी शेप कैसे डिटरमिन होगी? 2 मार्क्स. It depends on, very good अबिया, जबरदस्त. It depends on sequence of dash. Amino acids. Amino acids. Very good, amino acids and protein. और दूसरा मार्क क्या होगा? Which then depend on, yeah, sequence of bases on dash. Duret. Gene or mRNA? mRNA, yeah. अब तो सबको engage करना है. Cell membrane also contain carrier proteins. Describe role of carrier proteins. You know, there are different movements which take place through cell membrane. So Yeah. can you name some movement which uses protein? Oh, active transport. You know, diffusion, बच्चों, diffusion osmosis, they take place through membrane. But for active transport, don't you remember, for active transport there were 5 conditions. Should I remind you which 5? One, Respiratory energy. yeah, against the concentration gradient. Yeah. Low to high concentration. Second one, it uses respiratory energy, ATP. Third, it is through protein. Living membrane. And proteins are fitted in the living membrane. Membrane. Yeah. ये तो 4 चीजें होगी. Anyway, it's a slow process. So what is that? Role of describe cell membrane. This describe role of them. तो हम क्या कहेंगे? Carry out. Active transport. Yes. Not every protein in the membrane is involved with this. Some are acting as receptors. तुम लोगों को ध्यान कर रहे हैं मेरी बात? दुरेश भाई, what have you studied? बताएं. We are doing carrier proteins. बेटा, where are they found? रेजा बेटा, किधर होती हैं carrier proteins? Membrane में. And they are involved in the movement या reception. Movement. So carrier proteins carry out active transport from, बोलो ना बेटा, from low to, High concentration. you may call it against the constant gradient. Using dash. Respiratory energy. Yes. So 2 marks, 2 बातें. यार प्लीज इन क्वेश्चन को देखो बेटा. मैं आपको क्या बताऊँ, आप पेपर्स में 2 वीक रह गए ना. यू शुड डू एटलीस्ट 3 पेपर्स पर डे. 2 पेपर तो मिनिमम करने चाहिए. हम 6 साल के पेपर्स के बगैर, अभी मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि आप, यू कांट एक्सपेक्ट ए अच्छी तरह समझ के डिस्कशन करिए. तो बच्चों मुझे बताओ कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस. 40 डिग्री सेल्सियस. बिकॉज ही नोज कि 40 पे जो है ना वो सबसे ज्यादा एक्टिविटी होगी. Yes. Explain the results in 6 marks. तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है. 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. पहले टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है, फिर कम हो जाता है. ठीक है. तो हम क्या कहेंगे? इंक्रीज. मैं लिखता हूँ, आप फिर करें. इंक्रीज In temperature. एक सेकंड, इधर मैं आपको ब्लैंक दूंगा, उसे फिल करें. इंक्रीज इन टेम्परेचर Oh. इंक्रीजेस डैश. Rate of photosynthesis. बेटा एक वर्ड, बेटा जेंटलमैन, एक वर्ड. One word. Photosynthesis. थोड़ा सा सोचें प्लीज, थोड़ा सा सोचें फिर बोलें. गिव योरसेल्फ अ ब्रेक. इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस डैश ऑफ डैश एंड डैश. So the number of, मैं आपको लेटर बताऊं, इससे स्टार्ट किससे होगा? एक के से होगा और एक Kinetic energy. हाँ ई से होगा और एक एस से होगा. यस. एंजाइम एंड सबस्ट्रेट. So the number of 6 marks हैं, 6 marks. So the number of dash increase. सी से. यस. अब बोले बेटा अमीर है, मोर एंड मोर डैश आर मेड. ई से. Enzymes are made. Yeah, so more. Yeah, I'm making it's true.
It's true only till dash. Optimum temperature. Very good. Optimum temperature. After that, Enzyme starts to denature. yes, very good. Enzyme denature. So less or no dash made. Enzyme substrate complex. Yes. Well done. So this was Ke and temperature बढ़ाओ तो Ke of enzyme and substrate increase. जब आप इसको दोबारा घर पे वीडियो प्ले करें ना तो आप इनकी पिक्चर्स लें. So the number of E S ये बड़े लेटर्स में लिखना है. E and S should be bigger. Complex increases. Okay. Yeah. More and more products are made. इससे फिर rate बढ़ता है. Yes. Per unit time. Rate means per unit. It's true till optimum temperature. After that, enzymes denature. So less or no ES complex. Are Then made. we Yeah. have 6 marks here, right? Yes. 6 marks doesn't mean 6 lines. Sometimes one line may give you 2, marks here. So आप बता सकते हो बच्चों ये जो है ना CO2 was supplied in excess during investment. Why? देखो ना at each temperature CO2 was in excess. Because he is investigating the effect of dash. Which one? बच्चों what is he investigating? ये sentence देखो ना. Temperature, because at each temperature, but CO2 was in excess. So CO2 concentration should not, ये common है. ये population ज्यादा थी ना, should not limit the rate of photosynthesis. बच्चों, what is he investigating? Temperature. So CO2 concentration should be at plenty of CO2, ठीक है, ताकि इसका effect ये फिर disturb ना करे. ये बताएं why not all the oxygen produced comes out of leaf? Because some Very good, because some is used in dash. Oops. बेटा photosynthesis में oxygen बनती है ना, तो why leaves do not throw this out? ईमान आप बताइए. Because some is used in dash. R से. Respiration. Respiration. Very good. Heather, this is specific. Iman, are you there? Haris Chima, plants जो ऑक्सीजन हमें देते हैं वो थोड़ा खुद भी यूज करते हैं. रोल ऑफ क्लोरोफिल रिजा पाशा डिस्क्राइब करना. रिजा मिस रिजा कन्वर्ट dash energy to dash energy. Light energy to chemical energy. Yes. Traps dash energy. Good job. Light energy. Very good. 2 marks. That's enough. है ना? ये बहुत लंबा पेपर है. Now we have many because मैं सोच रहा था दूसरा भी देखते हैं GC. 2 ways in which circulatory system of fish is different from mammal. Fish में जो है ना Sir, single circulation system. Like Single. it's not double circulation. well, लेकिन ये state नहीं है, describe है. Great, very good बेटा. Single. So describe करना है. That is blood. Very good. Passes through the heart once. Well done बेटा. और जो दूसरा इसका फीचर है वो क्या है? Sorry? Wow, human heart has 4 chambers and fish heart has 2 chambers only. और बच्चों पता है उसमें पार्टीशन भी नहीं होती. No separation of oxygenated and deoxygenated. Oxygenated and deoxygenated.
जो आप क्यों नहीं गए वो आप बोर फील करिए। एडवांटेज ऑफ डबल सर्कुलेशन का एडवांटेज क्या होता है? डबल सर्कुलेशन इज इसके एडवांटेज है, देयर आर ब्लड इज अंडर डैश प्रेशर्स 1 या 2, या ब्लड फ्लोज अंडर टू प्रेशर्स ना, जो और है लो प्रेशर, मतलब डबल सर्कुलेशन का, ही इज नॉट आस्किंग अबाउट डिफाइनिंग डबल, उसका बेनिफिट। तो लो प्रेशर सर्कुलेशन बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन डैश एंड डैश। अमीर हैदर, रोशीन और मैक्सिमम डैश, well done. Low pressure circulation between heart and lungs for maximum oxygenation. Your day. You rock. नहीं, अच्छा, वो अच्छी रिफ्लेक्शन है आपकी, थोड़ा सा मेहनत करें और अच्छा हो जाए इंशाल्लाह। और दूसरा इसका एडवांटेज, या हाई प्रेशर सर्कुलेशन, ये रोशीन बताएंगे। हाई प्रेशर सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड डैश, हार्ट एंड होल बॉडी, है ना, टू बी कैरीड टू डैश डिस्टेंस, Higher distance. yeah, to be carried to longer or higher or greater distance. So this is what we are doing is wait, let me plug in my charger. Yes, बच्चों, तो Yes, sir, ये रिजा can बताएंगे, also no say other that. than रिजा, what is A B C D E F G? What's A? Definitely lungs. यार प्लीज बेटा बताएं, पूरी क्लास गुजर गई है। अच्छा, ये हेपेटिक आर्टरी है विच इज टेकिंग, हेपेटिक आर्टरी क्या करती है? टेक्स ब्लड टू डैश। अभी ये कल हमने किया भी सर, शायद आपको याद है ना। तो बेटा ये हेपेटिक आर्टरी हम कहते थे लंग्स को लेके जाती है ना, और सॉरी लिवर को, और द Yes. वन टेक्स अवे फ्रॉम लिवर इज व्हाट? हेपेटिक Hepatic vein. वेन। जैसे लिवर और ये उसके बीच में क्या है? Gallbladder. गॉल ब्लैडर, वेरी गुड। और एक इंटेस्टाइन से भी आती है, अमीर हैदर आपको याद होगा, Hepatic portal vein. Yeah. hepatic portal vein, yeah, it brings things from what? Intestine to liver. Small intestine. Which part Yeah, of small small intestine. intestine? Duodenum, first or second part? Second. There is Second part, I second. guess. Second is where dash occurs. Abhi ha. Digestion or absorption? Ab- Absorption. Because digestion and Absorption. first part, duodenum. तो ये जो है ना, अब मुझे बताओ कि ये क्या है? लिवर। एंड व्हाट इज एक्स? Hepatic portal vein. व्हाट इज सी? स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, या Yes. इलियम, सेकंड पार्ट। यस और नो? व्हाट्स डी? थोड़ा नीचे करके, किडनी, मैन। देखो ना, किडनी से रेनल वेन जा रही है, और व्हाट कुड बी दिस वन? ई। इसका नहीं पता, ये तो किडनी हो गया ना, क्यों? रेनल वैन लेके जा रही है, रेनल आर्टरी ला रही है, ई का नहीं। चलो, Sir, E bladder होगा ना, हाँ, कुड बी ब्लैडर। क्योंकि वो किडनी से फिल्टर आउट होके ब्लैडर में जाता है. यूरिनरी ब्लैडर, हाँ, लेट्स सी। Yep. Okay, so state the letter that identifies where absorption of digestion occurs. Sir, ऊपर करें. Sir, Charlie. क्या होगा? C है ना? Then excretion of CO2 from body, lungs. A. Alpha. Alpha. Formation of urine and production of bile. Delta. Sir, kidneys, delta. ना, हाँ, यूरिन डेल्टा में, और बाइल Bile X में होगा. बी में। Oh yes. लिवर मेक्स बाइल, है ना? Yes. अच्छा, एक्स बताएं, एक्स।
hepatic portal vein, Hepatic portal. role of liver and excretion, removes, liver क्या कहता है, remove amino part from the amino acids. of, very good, of extra amino acid. Yeah. What is it called? Iman? Deamination. एक मिनट मीरा दे, deamination. ईमान से पूछते हैं. Then amino part, Mr. Iman, amino part combines with CO2 Urea. Yes. to It makes produce- urea. Yes, to produce urea. So 4 marks. यार इसका और क्या हो सकता है? बच्चों एक सेकंड. 5. So 4 marks question. Deamination, removing excess amino part, amino acids, urea released into the blood. लैक्टिक एसिड भी ब्रेक डाउन होता है. हाँ 4 पार्ट्स. सही है, हमारे 4 बन गए. अच्छा, यस, probably we are near ending. 2 hormones released by ovaries. Very good. Estrogen and anybody, progesterone. Progesterone. Yes. State the organ the antibodies cross to reach the fetus. Placenta. Yes, placenta. अब देखो ये एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन है एंड बेबीज ब्लड, ठीक है, कम हो रही है, और ये है एंटीबॉडी इन द प्रोड्यूस्ड बाय बेबी. ये वाली जो है ना वो मदर से आ रही है और ये बच्चा खुद बना रहा है. समझ रहे हो ना बेटा? व्हेन इट कम्स फ्रॉम मदर, अगर वो कम हो रही है साथ साथ वो अपना खुद बना रहा है. तो व्हेन दे स्टार्ट मेकिंग देयर एंटीबॉडीज वेल प्रॉपर्ली by 6 months, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप हुई. एनीवेज, अब ये मुझे कोई कंप्लीट कराएं. आफ्टर द बर्थ, concentration of antibodies acquired from mother decrease rapidly to 0 at dash months. 6 months. Antibodies start being produced by the cells called dash. Do you remember which cells make antibodies? Lymphocytes. Very good, Iman, Rubaisha. Lymphocytes. The total concentration of antibodies in the body from birth source is dash at 4 months. ये बच्चों देखो 4 months में टोटल कितनी होगी? 4 months में देखो ये मदर वाली इतनी रहेगी 18 I guess. हाँ. 18 और अपनी उसने बना दी 38. 8 8 16 56. ठीक है, तो टोटल कितनी रहेगी बेटा? 56 units. The concentration of antibodies acquired from mother and concentration of antibodies produced by fetus are same at dash month. ये देखो ये 3rd. Yes, 3rd month. Describe benefits of mother feeding, breastfeeding. Yeah, there are no nutrients, antibodies. Provides sufficient amount of antibodies. Antibodies, ठीक है, and milk provide dash immunity, passive active, Passive immunity. naturally artificial. Natural. Very good. तो natural पैसे होता है, रेडीमेड. देखो पैसिव में नेचुरल भी आर्टिफिशियल भी है. तो मदर से जो एंटीबॉडीज आते हैं ना वो नेचुरल पैसिव. अभी आप पैसिव मतलब रेडीमेड एंटीबॉडी. वो अगर आप इंजेक्शन लगाएं तो वो आर्टिफिशियल पैसिव है. एक्टिव होता है when body is activated to produce its own antibody. Passive is when ready-made antibodies are given. Active is when body is activated to produce its own antibody. चाहे वो आप इंजेक्शन लगा वैक्सीन से कराएं या पैथोजन से हो. जो पैथोजन आता है ना हमारी बॉडी में and we start making antibodies, this is called natural active. What is it called? Natural active. Natural active. अब ये फिर बताएं, when through vaccine, जो वैक्सीनेशन से हम एंटीबॉडी बनाते हैं, what is that? Artificial
एक्टिव। देखो एक्टिव को आप यहां से याद रखें, एक्टिव मींस बॉडी इज एक्टिवेटेड टू मेक इट्स ओन एंटीबॉडी ईदर बाय वैक्सीनेशन और बाय पैथोजन। Yeah. Did you get it? Yes, sir. So 2 ways breastfeeding, यार ये दूसरा मार्क्स किसका होगा? Antibodies provide passive immunity and describe safe nutrients. हाँ nutrients भी हम देखते हैं क्या है? Nutrients safe from diseases. ये आप देख लोगे the marking से इसका कुछ और detail. Anyway, easy question. 2 ways other than breastfeeding that baby can acquire immunity. तो एक तो वो होता है through Vaccination. Sorry. Sir, Sir, vaccination. vaccination and through placenta. या वैक्सीनेशन में क्या होगा? नेचुरल एक्टिव है ना? Yeah. अच्छा थ्रू प्लेसेंटा ये क्या होगा? अबिया नेचुरल पैसिव समझ आ रही? और थ्रू पैथोजेंस क्या होगा? इन्फेक्शंस जो होती है। वाह नेचुरल एक्टिव। और बेटा इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडी क्या होगा? Sir, passive, artificial passive, and यस Yeah. आर्टिफिशियल पैसिव। अब यह देखें एक्टिव वो होता है जब बॉडी इज एक्टिवेटेड टू मेक इट्स ओन एंटीबॉडीज। पैसिव ये जब रेडीमेड एंटीबॉडीज। अच्छा एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ, यार खत्म नहीं हो रहा, टाइम खत्म हो रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ शेप ऑफ एंटीबॉडी। या आप बोलोगे कि अगर इफ शेप इज चेंज है ना, शेप मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री। सेम कभी भी नहीं लिखना, क्या करें? कॉम्प्लीमेंट्री टू व्हाट? Complementary antigen to the shape binding of the site. antigen. अगर नहीं होगी तो क्या होगा बेटा? वोंट बाइंड विद एंटीजन। और जब बाइंड नहीं करेगी तो क्या होगा? फिर No immune response will be triggered. फैगोसाइटोसिस नहीं होगा, एंगल्फिंग नहीं होगी, फैगोसाइटोसिस नॉट अकर। और बेटा ये बताओ स्टेट द केमिकल एलिमेंट दैट प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। CHO है ना? अच्छा कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन ऑल हैव CHO। पेपर इज डन समहाउ, हमने इसको खींच ही दिया। तो गुड लक, आई विल शेयर विद यू द वीडियो। प्लीज आप लोग अगला पेपर करें खुदा के लिए। बेटा मैं आपको हाथ जोड़ूं, पेपर करो भाई, पेपर करें। आपको 2-3 पेपर रोजाना करने चाहिए। यू हैव लेफ्ट विद व्हाट 10 days है ना? a little more than that। Sir, 30th को पेपर है। 3 थ्योरी के पेपर रोजाना करें ऑर्डर में, नवंबर टू जून में, ठीक है ना? अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz, sir.